ड्रीम ब्रेक में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शुमारे में हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी जरूरतमंद और फायदेमंद पाए जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अशफीन उबैद खान, जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और करंटली डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं एट पॉलिटेक्निको डी मिलानो, इटली एंड टॉप ग्रुप बर्लिन, जर्मनी। उबैद, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में थोड़ी डिटेल्स दे और अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल जी। मैं कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में तहसील बिजबेहरा के आउटस्कर्ट्स में एक स्मॉल टाउन आरावनी वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन यहीं बिजबेहरा के एक फेमस स्कूल पब्लिक स्कूल बिजबेहरा से की। उसके बाद मैंने जो अपनी +2 की जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग से की। thereafter आई मूव टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने अपना बैचलर्स ऑनर्स किया केमिस्ट्री में। और उसके बाद न्यू दिल्ली नोएडा में एक इंटर्नशिप के बाद आई मूव टू चाइना, जहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में की, जहाँ पे मोस्टली आई वर्क विद नैनो टेक्नोलॉजी। और उसके बाद I thought कि I will continue my work and I opted for a PhD, which is what I'm doing right now, as I work as a Marie Curie PhD scholar at Politecnico di Milano and work jointly with Politecnico di Milano and the Tau Group in Berlin. But what made you go for this scholarship? Like, oh, was it always intentional, or was it like by chance? Or and how did you go from the application process to literally going for masters and PhD from Kashmir to Berlin? How was the journey? I think it wasn't that like मैं कश्मीर में बैठ के I start thinking that I will go abroad. There was this step by step process and I think कहीं ना कहीं जो मेरी बैचलर्स की डिग्री AMU में हुई अलीगढ़ में, जहाँ पे मैंने इंटरेक्ट किया और कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए स्टडी अब्रॉड के, एंड देयर आई गॉट दिस एक्सपोजर के स्टडी अब्रॉड भी कुछ चीज है। बिफोर दैट आई वाज फॉर मी इट वाज लाइक समथिंग के स्टडी अब्रॉड एक बहुत लग्जरियस चीज है जिसको बस सुपर रिच अफोर्ड कर सकते हैं। बट वहां जाके हमें ऐसे स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करने को मिला जो ऑलरेडी अपनी हायर एजुकेशन यूरोप और यूएस में कर रहे थे, एंड दे वर लाइक गाइडिंग अस, एंड देन इट वाज लाइक ओके वी कैन आल्सो ट्राई फॉर दिस एज वेल। सो ऐसा कोई certain moment nahi tha. It took like some time of getting some exposure. Like you said, you opted for masters in China. So how was that experience? Yes, so agar I did my master's in Zhejiang Sci-Tech University under the President Fellowship Program. It was a fully funded master's degree program. Or one thing I want to raise here is कि जो चाइना में मास्टर्स डिग्री होती है वो इंडिया की मास्टर्स डिग्री से सिग्निफिकेंटली बहुत डिफरेंट रहती है। चाइना में मास्टर्स डिग्री जो होती है दैट्स यूजुअली 3 years लॉन्ग, और इट्स अ वेरी रिसर्च इंटेंसिव मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आप एक साल में ही ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज खत्म करते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट 2 years especially in STEM fields you work tirelessly uh, in research and basically lab practices, and you have to work you have to work for your thesis. इसके लिए आपको at least one SCI paper publish करना पड़ता है. So it's a research oriented master's degree, I can say, in China. What is your PhD all about? जो PhD मैं कर रहा हूँ, PhD Marie Curie Research Fellowship, it's actually a fellowship that is awarded by the European Commission. और इसमें क्या होता है, this fellowship is not only in the STEM field, it goes for almost 40 disciplines. और इस Marie Curie program के which comes under this term called Horizon Europe. So Horizon Europe में different types के fellowships होते हैं, जिसमें ITN which is for PhD and individual fellowship which is for postdoc, and there are different types of PhDs. So what happened is कि बहुत सारे यूरोपियन लैब्स जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कंपनीज में, वो कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पे काम करे एक साथ। और उस रिसर्च टॉपिक का एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बनता है, एक कंसोर्शियम बनता है। जैसे मेरा जो ग्रुप है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, सॉरी, जो कि यूके में है, और पॉलिटेक्निको मिलानो जो कि इटली में है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कंपनीज जैसे टाउ ग्रुप है,
and they go together and they start working on this particular research direction. और specifically इसमें वो बहुत सारे PhD students और जिसको इस लिंगो में अर्ली स्टेज रिसर्चर कहते हैं उनको हायर करते हैं बेसिकली PhD स्टूडेंट को ताकि वो इसी टॉपिक पे काम करे. सो देयर इज अ पर्टिकुलर रिसर्च डायरेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी बीन सेट. एंड जैसे कि मैं भी एक एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पे, बट मेरे अलावा और भी बाकी मैरी क्यूरी फेलो है जो मेरे साथ मेरे ही कंसोर्शियम में मेरी ही रिसर्च टॉपिक पे भी काम कर रहे हैं. सो इट्स लाइक अ ग्रुप वर्क. Like you said, belonging to the environmental engineering background. So, what do you find? Is there something challenging that you find in this job? In environmental engineering, you have to solve some real world problems, something which we face from air pollution, water pollution, sustainable development, and all those things. And जितना world progress कर रहा है, as much as climate change is happening, population is exploding, and we see the industrialization in developing countries. So in countries like India, ज़्यादातर challenges उठ रहे हैं by the by passing time. जिसमें environmental engineering has to play a very crucial role in making sure that everything goes in a very proper way and we are not further depleting or further destroying our environment around us. So I think that is the challenge in environmental engineering, that you have to solve these very realistic issues which are happening around you. Okay, if you get a chance to, work back here in Kashmir, what according to you do you think would be your focus area? Will it be the same like your background, or will it be something else? Well, I since I work as a researcher in Europe, और मैं इस बात पे एम्फेसिस करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो वाटर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल रेमिडिएशन क्राइसिस यूरोप में है, द स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम हियर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी they have some very sophisticated wastewater and water treatment technologies that are in the place. But compared to that, अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पे 80% वेस्ट वाटर डायरेक्टली रिवर्स में डिस्पोज किया जाता है, so here the challenges are very different. Regulations are different from the government. So in that sense, I don't think I think here the challenges will be quite more if I try to work here. But at the same time, I think it will be very noble to work in these kind of causes, especially in Kashmir, where or in North India, where we see that water pollution is drastically increasing because of industrialization, and particularly in Valley, we see high amount in use of pesticides, especially by our farmer or our apple production industry, जहाँ पे बहुत टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज भी ग्रो हो रही हैं, जिसकी वजह से फर्दरमोर हम देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर जो डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है रिवर्स लाइक जहरलिम में. तो आई थिंक देर आर वेरी हाई एप्लीकेशंस इफ वी try to work here in Valley as well. Hmm. So, like you said, according to your research direction, which is water pollution right now, are there any views on Kashmir in context to that, like particularly for Kashmir? हाँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें हमें क्या होता है, देर इज नॉट जस्ट चैलेंज ऑफ साइंस, देर इज ऑल्सो चैलेंज अबाउट एथिक्स एंड अदर सोशल sciences which are working in like promoting a very sustainable way of living. एक लोगों में कॉन्शियस बढ़ाना कि वाटर स्कार्सिटी एंड वाटर पोल्यूशन नाम की भी कोई एक चीज है. तो आई थिंक वी हैव टू वर्क इन प्लेसेस लाइक कश्मीर. we have to work from very ground level compared to what we see in Europe, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे लोग already बहुत ही environmentally conscious है, plus regulations are different. But here in Kashmir, I think there are no regulations or also or any sort of very high conscience about environmental sustainability. And I think यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि high construction हो रही है, and उसके like we see population increasing, deforestation is happening. At the same time, agriculture में हम high amount of pesticides, जैसे मैंने
पहले ही बताया वो यूज किए जा रहे हैं. प्लस आई थिंक we can say something like they have to work from the scratch to build the whole apparatus of the wastewater treatment and water treatment technology in Kashmir. Yes. Uh, so, according to you, what do you think? What environmental issues do you think will require the most attention in coming years? I think first of all, climate change is something that we are mostly familiar with. We experience it. I think this year in Yes. everywhere. Like the summers are getting hotter and longer. I think we don't need much more evident ever than this. Right? It's quite evident everywhere. So इसके अलावा जो water pollution है, maybe it's not evident in places like Kashmir Valley because we have already a significant amount of water resources here. But if you go to some southern parts of India where we see that water pollution and water crisis are very real. So in that sense, yeah, we see these issues right now happening all around the world, and there has to be something done in this context no matter wherever we live in the globe. These these kind of crises have very equal consequences for each and every individual. You went for masters in China. Please Yes, elaborate on the application process and the way you prepared. yes. So like I already previously mentioned कि चाइना में जो मास्टर्स डिग्री है वो एक यूजुअली एक रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स डिग्री होती है जहाँ पे आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है मास्टर्स डिग्री का विच हैज यूजुअली जो स्टेम फील्ड से वहाँ पे एक कंपलसरी पब्लिकेशन होती है थीसिस के हवाले से बट जहाँ तक एप्लीकेशन प्रोसेस की बात है यूजुअली जो सारी यूनिवर्सिटी चाइना में है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है एप्लीकेशन प्रोसेस इज यूजुअली सिमिलर आप एक बहुत फेमस वेबसाइट है campuschina.org नाम से जहाँ पे आप अपना जो भी आपका लाइक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है फील्ड ऑफ एजुकेशन है लाइक कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फाइन आर्ट्स वटेवर आप वहाँ पे जाके सर्च करके आप ये भी देख सकते हैं कि whether you want to study in English or you want to study in Chinese medium. So if you are mostly interested in English medium, you can sort out that you just want the courses who are in English और उसके बाद आपको एक पूरा लिस्ट मिलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एक कोर्स ऑफर हो रहा है चाइना में और जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है चाइना में 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप्स रहते हैं. First is the scholarship that is awarded, very famous scholarship. It's awarded by the Chinese government. It's known as the Chinese Government Scholarship or CSC for short. Second type of scholarship is awarded by provincial government. जैसे कि हमारे इंडिया में states हैं like J&K, Haryana, Maharashtra. So in China there are also state governments which sponsor foreign students. So those are like provincial scholarships. And third is the type of scholarship that is given directly by the university, university scholarship. Personally, I had a university scholarship, but the application process for all of these three are more or less the same. So usually scholarship आपका just basically आपका tuition fee होता है, which is your fees and your accommodation plus your health insurance are also maybe if you are lucky you can also get monthly stipends as well in master's degree. But the scholarship, the process is more or less the same for bachelor's as well as for PhD, what is like for the master's degree. So अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाके पोर्टल पे he can apply for the particular course और जो ही वो अप्लाई कर रहा है at the same time he can select what type of scholarship he wants and he can also fill the scholarship application form while he is applying for the university. और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एक particular professor if you are interested in a particular research by a particular professor you can directly approach that professor through an email or something और अगर आपको वहां से positive experience मिल रहा है then that professor will further guide you what type of scholarship or maybe he will host you by his own lab funding. So there are different scholarships and the process is more or less the same. You have to find the course first and almost जहाँ तक मेरी knowledge है almost every
mainstream university in China offers some sort of governmental or university scholarship to all the foreign students. Currently, you're holding a Marie Curie PhD fellowship. Okay, so can you Yes. give details on how did you go, like how did you went through the process, the application process to finally achieving? जो ही मैं अपना मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहा था और फिनिश करने वाला था, my supervisor was somehow who really encouraged me to apply for this scholarship. Otherwise, I had no idea. And then मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और जो मैरी क्यूरी PhD फेलोशिप या PhD प्रोग्राम होता है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड अ वेरी well celebrated fellowship in STEM research. But like I said, इसमें खाली STEM research नहीं, but आपको 40 disciplines होते हैं जिसपे आपको फेलोशिप मिल सकती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अनलाइक ट्रेडिशनल PhD जहाँ पे आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं या आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालते हैं, मैरी क्यूरी में आपको डायरेक्टली जो आपका प्रोग्राम होता है, आपका कंसोर्शियम होता है, आपको वहाँ पे ही अप्लाई करना पड़ता है। आपको किसी यूनिवर्सिटी पोर्टल में किसी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करना पड़ता। यू आर फर्स्ट hired as a Marie Curie researcher. At the same time, you get this benefit that you're also kind of like you also get admission as a PhD researcher in that particular university. So PhD के लिए आपको एक particular application नहीं डालनी पड़ती है आपको, you have to just apply for the fellowship. और दूसरी बात ये है कि there are different types of fellowships in Marie Curie. One is the normal one, which is very common, is where you have a आपका एक particular host university होगा जहाँ पे आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, and then all the other member collaborating companies or universities होंगे जहाँ पे आपके 2 या 3 मंथ के विजिट्स होते हैं, secondments. But दूसरा is the type which I do is called, more specifically it is called European Industrial Doctorate. इसमें आपको जो PhD का आधा टाइम होता है, means like 1.5 years out of my 3 years जो होते हैं, वो आपको एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेंड करने होते हैं। बेसिकली द रिसर्च आई वर्क, जो मेरा एनवायरमेंटल में फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन पे रिसर्च हो रहा है, आवर आइडिया इज कि हम बस रिसर्च ना ही करें, उसके अलावा हम इस रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन भी देखें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होंगी। तो जो हमारी बेनिफिशियरी कोलैबोरेटिंग कंपनीज हैं, विच आर बेसिकली एनवायरमेंटल रेमिडिएशन कंपनीज और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो हमें एक काइंड ऑफ लाइक एक सेटअप प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपनी रिसर्च की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी देखें और उन कंपनीज के एक्सपर्टीज को भी अपने अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर मेरे केस में मेरा जो एकेडमिक partner है that was Politecnico di Milano and University of Warwick in UK, and जो मेरा मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर है जहाँ पे मेरे को 1 साल गुजारना है, that's the Tau Group in Berlin, Germany, जहाँ पे currently I'm working in my second year in Tau Berlin. इसके अलावा there are some other companies where I have to spend like more or less half a year. One of them is called BioAzul. It's also an environmental remediation company based in Malaga, Spain, and एक तीसरी कंपनी है which goes by the name Lario Reti Holding. It's an Italian company situated in Lago. So basically, this is how the Marie Curie program looks like. You have to work in collaboration with different labs and different companies. और जहाँ तक एप्लीकेशन प्रोसेस की बात है, आप like I said, it doesn't go, the application process doesn't go like a normal PhD in abroad. So what you have to do is you have to find कि कोई कंसोर्शियम है, सॉरी, जो PhD फेलोज या मैरी क्यूरी फेलोज को हायर कर रहे हैं, और उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, सॉरी, Peraxis नाम की, which is a website of education by European Commission. It goes by the name of Peraxis. तो वहाँ पे जाके आप कोई भी बंदा अपने अपने जो उसका फील्ड ऑफ कंसर्न है वहाँ पे जाके वो he can search regarding this and check if there are any fellowship, Marie Curie fellowships which are available to for application, and then he can go from there. Usually जो process of admission में material लगता है which is very standard, like you must have your cover letter, your education documents, and
maybe some recommendation letters. Also, they will look if you have done some जो आपका previous research है वो align होता है या नहीं. I think, in my opinion, particularly in medical fellowship, it uh, it is really beneficial if you have done some, if you have a very, somehow parallel or somewhat very similar prior research experience, which will really help you in the application process. उसके अलावा maybe you might need IELTS. In my case, it was required, or some other documents which are not a very big deal. But this is like a standard way of application. It goes like आप एक particular job के लिए apply कर रहे हैं, kind of like you're applying like that. Do you have any final thoughts to people out there or any advice? Yes, indeed. अगर कोई ऐसे लोग हैं जो study abroad का एक टाइप का एक ड्रीम रखते हैं या they are interested in study abroad, तो and they are not maybe financially sound to finance their education abroad, तो उनके लिए मेरा बस यही मैसेज है कि that there are endless opportunities if you are really interested. And I think जो बहुत लोग सोचते हैं कि maybe we don't have connections or all those things, but I think in my case कि I didn't have any particular connection or anything. Everything जो भी मैंने अपने application process या इस journey में use किया और जो भी information मिली, that was easily available on internet. So internet has all the, I would say, there is like the internet has endless reserves of knowledge. So it depends आपकी किस website पे आप सबसे ज़्यादा time spend करना चाहते हैं. So in context of study abroad, jobs and all those things, I think आपको endless resources मिलेंगे. आप किसी भी education background से हो, चाहे वो medicine हो, economics हो, computer science हो, and you want to continue your education abroad, I think internet is your best friend, which can guide you from your application process all the way to how you will travel there, how you will find accommodation. I think each and everything you will find on the internet, sorry, with free of cost. Thank you so much बहुत for being शुक्रिया with us मुझे today. मौका देने का.